So, hello guys, welcome back to my new another live। तो आज का लाइव है मेरा ई फुटबॉल पीसी जो भाई साहब यहाँ पे मुझे कोई अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाओ गाइस, ज्वाइन करो अपना आईडी कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप करो भाई। तो अगर मेरे साथ मैच खेलना चाहते हो तो पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो कैसे हो आप लोग? मुझे लग रहा है अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। पहले ये फुटबॉल मोबाइल करता था, फिर मोबाइल थोड़ा डेड हो गया, इसलिए जो है उसमें लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। तो मेरा लाइव स्ट्रीम का कोई वजूद नहीं है। मतलब उसको क्या बोलते हैं गाइस। और तो वॉइस और ग्राफिक्स कैसा आ रहा है इस तुम लोग कमेंट करके बताना। अभी क्या मैच लगाओ वो मेरा मेन बात है। ठीक है, तो चलो एक मैच हो जाए। ठीक है, तो मैच स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये बताना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। आप लोग बहुत सपोर्ट किया। मेरा यूट्यूब का 100 के कंप्लीट हो गया, मतलब 100 के कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू सो मच। मतलब टोटल व्यूज़ मेरा ये यूट्यूब का 100 के हुआ है, वो भी इतना साल में। पता नहीं इतना मेरा यूट्यूब में शॉर्ट्स में भी वीडियो में भी कितना कम कम व्यूज़ आता है वो मुझे नहीं पता। तो ठीक है, लाइव स्ट्रीम में जितना बंदा आता है मुझे रिस्पेक्ट करता है, मैं भी उन सभी को रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, सभी को करता हूँ। और चलो यहाँ मैच खेला जाए। यहाँ पे बहुत सारा पैक है, पहले एक पैक ओपन कर लेता हूँ, मतलब क्या बोलते हैं, चलो देखता हूँ। ठीक है, तो ये फुटबॉल पीसी में भाई बहुत अच्छा ग्राफिक्स है। और एफपीएस का जो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताने वाला था, मैं एक वीडियो दिया था, मतलब बहुत पहले डाला था। ठीक है, तो वो वीडियो में बताया था एफपीएस का नया फॉर्मूला दिया है इंग्लिश पे भी। देखो एफपीएस फ्रेम रेट पहले 60 एफपीएस से अनलॉक था, अभी देख लो आप लोग कितना एफपीएस है भाई। मेरा डिवाइस में जितना जा सकता है उतना एफपीएस मेरे को दिखाएगा, अनलिमिटेड दिखाएगा। लास्ट यहाँ पे 360 दिखाएगा, फिर अनलिमिटेड, मतलब उससे ज़्यादा जाएगा तो मतलब 400 एफपीएस जाएगा गेम पे, तो वो दिखाएगा अनलिमिटेड करके। ठीक है, तो लास्ट तो मेरा डिवाइस पे 360 एफपीएस जाएगा भाई, तो ये तो देख सकते हो। तो इसलिए इतना ही दिखा रहा है। आपका डिवाइस पे कितना जा रहा है या कितना दिखा रहा है वो कमेंट बॉक्स पे बताना। या हो भी सकता है हर डिवाइस में 360 एफपीएस लास्ट दिखा रहा है, वो पता नहीं मुझे, वो सर्च करके देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो बहुत दिन बाद लाइव स्ट्रीम पे आ गया भाई। मेरा मैं पहला बात बता रहा हूँ, वॉइस कैसा आ रहा है, ग्राफिक्स कैसा आ रहा है, मैंने एक बार भी नहीं चेक किया। आप लोग कमेंट करके बताना कैसा आ रहा है। ठीक है, और वॉइस मेरा माइक्रोफोन नहीं है गाइस, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा, आप लोग सपोर्ट करो तो एडजस्ट क्यों नहीं होगा, आप लोग सपोर्ट करोगे तो एडजस्ट होगा ना गाइस। सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे एडजस्ट होगा। लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना सपोर्ट किया उससे ही मैं काम चला ले रहा हूँ। तो फिलहाल अभी मुझे पता है आगे और जाके सपोर्ट मिलेगा, ये मेरा मुझे पता है, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ ये तो लाइव स्ट्रीम हो रहा है। तो ये लाइव स्ट्रीम पे मैं बता रहा हूँ आप सभी को, क्या बता रहा हूँ, जो जो बंदा देख रहा है या फिर नहीं देख रहा, अभी तो जीरो दिखा रहा है, कहाँ मतलब कोई नहीं देख रहा है, कमेंट भी कोई नहीं किया। तो अभी 2026, ठीक है, 2/7/2026, 12:38 PM में सभी को यही बता रहा हूँ, मतलब मैं खुद को बता रहा हूँ, आने वाला फ्यूचर में देख सकता हूँ। तो मुझे पता है आप लोग सपोर्ट करोगे तो लाइव स्ट्रीम कैसा होगा, आप लोगों का साथ कैसे बात कर पाऊंगा, लाइव स्ट्रीम कर पाऊंगा, सब कुछ कर पाऊंगा भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो मैच स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, अभी मैच यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। चलो यहाँ पे पहले जाते हैं, यहाँ पे पहले जाते आके टीम पे कुछ दिखा रहा है पहले वो मेरे को। चलो एक ये करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ओ 470 है। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे
यहाँ पे कस्टमाइजेबल एलिमेंट्स दिखा रहा है, तो गेट आइटम दैट एक्सप्रेस योर स्टाइल। सो मतलब यहाँ पे तुम कस्टमाइज कर सकते हो समथिंग, नहीं कोला किसको सो रियल फैंस ओके कस्टमाइजेबल एलिमेंट्स। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे वो मतलब ये नया है जर्सी भाई, आप लोग चाहो तो ले सकते हो यहाँ पे, ले सकते हो भाई। 100 रुपया का बात है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो ले सकते हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है क्या करोगे आप लोग। ठीक है, चलो यहाँ पे स्पेशल प्लेयर पे जाते हैं, लोग करते हैं भाई, किसको करना है यहाँ पे बैंड लाइट दिया है, इसको दिया है भाई, 4 स्पिन मारूंगा भाई, किसको मारूंगा, किसको मारूंगा, आप लोग कमेंट कर बताओ भाई कौन बंदा फंसेगा भाई, रोनाल्डो भाई, नेमार भी है यहाँ पे। अरे एक सेकंड रुक जाओ, वो नेमार तो मुझे पता है वो खेल के भाई उसको लेना पड़ेगा भाई, कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर वो बाद में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए लाइव स्ट्रीम चालू रहेगा, चालू रहेगा, आप लोग ऐसे ही आना, ऐसे ही डेली आते रहें, ठीक है। चलो यहाँ पे बेबीटो, बेबीटो अच्छा है भाई, बेबीटो को छोड़ो क्या, बेबीटो ही फंस सकता है भाई, मेरे पास 400 है भाई, तो उस 400 में बेबीटो ही फंस सकता है, और कोई मौका नहीं मिलता। मान लेता हूँ 100 गोल्ड, देखता हूँ क्या होगा। चलो फंस जा बेबीटो, फंस जा फंस जा फंस जा बेबीटो, फंस जा। ये भाई कौन है भाई, बेबीटो नहीं है। ये भाई कौन बहुत सा प्लेयर आ गया ये है, क्या मायला है तो अभी, मतलब जीत के खेलना भी नहीं सीखा भाई, ये फंस गया भाई, ये स्किल खराब कर दिया, स्किल मारा भाई। ठीक है नहीं चाहिए, मैं तेरे को मैं बाद में जाके कर लूंगा, ठीक को अपना देखेंगे। अब भी फंस जा बेबीटो, यहाँ पे नौटंकी मत करिए, फंस जा बेबीटो का सवाल है भाई, अरे फंस जा। 50 है, 50 में 4 स्पिन मारूंगा, 5 स्पिन थोड़ी हो गई, दे दे किसी दे दे। दूसरा कुछ नहीं मार रहा हूँ क्योंकि फंसेगा तो नहीं, मुझे पता है श्योर, ये मार के फंसाना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। फंस जा दे दे, अबे ये भी नहीं फंसा, बिल्कुल नहीं फंसा, ये स्पिन मार के दे दो अभी, आगे 2 स्पिन हो तो ऐसे ही मार दूंगा, ऐसे ही मार दूंगा डायरेक्ट, जो होगा देखा जाएगा, अगर फंसेगा तो फंसेगा भाई, नहीं फंसेगा तो नहीं फंसेगा, ये ये फंसेगा नहीं। मुझे लगा था बहुत नौटंकी करेगा, पैसा का बात नहीं है, लास्ट है भाई, फंसेगा तो नहीं, चलो फिर भी देखा जाता है क्या होता है। नहीं फंसा भाई, सारा पैसा बेकार हो गया मतलब, 400 गोल्ड खेल के कमाया था भाई, बहुत मेहनत करके, पैसा वैसा नहीं मारा था, उतना पैसा नहीं है मेरे पास गोल्ड खरीद लूँ, ठीक है, उतना पैसा मेरे पास नहीं है गोल्ड खरीद लूंगा। तो एक बार बेबी तो नहीं फंसा भाई, क्या करूँ, ये 100 मेरा बेकार हो गया, चलो। अरे फट 50 में दे देता ना बेबी तो भाई, ये क्या कम पड़ जाता है क्या ये फुटबॉल का, कम पड़ जाता है यार। यार नेमार को तो ले लूंगा ये, ठीक है, ठीक है। नेमार का एक बार चेक करके दिखा दूं क्या आप लोगों को, देखिए नेमार का क्या क्या फीचर्स है, मतलब फीचर्स, एक फोन है क्या, मोबाइल फोन तो नहीं है तो फीचर्स है, लो देख लो नेमार को क्या क्या दिया है नेमार, देख लो भाई, ऑफेंसिव अवेयरनेस देख लो 72 अभी है, अभी उसका ऑफेंसिव अवेयरनेस 72, मतलब उसको मतलब गेन भी नहीं किया, मतलब ट्रेन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बॉल कंट्रोल देख लो 83 अभी, ड्रिबलिंग देख लो 84, टाइट पोजीशन देख लो 83, मतलब क्या ही बोलू कहूँ कुछ भी। लो पास देख लो 79, लॉन्ग पास देख लो 78, फिनिशिंग देख लो 77, हेडिंग देख लो 50 दिया है भाई, मतलब इतना मतलब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कल और बाकी सब 82, और इधर एक्सीलरेशन अभी दिखा रहा है 80, स्पीड भी 75, और बाकी सब ठीक ठाक, बैलेंस 79 या 73, ठीक है, और किकिंग पावर 75। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, जब कार्ड मिलेगा तब देखा जाएगा, अभी कार्ड तो नहीं मिला फिलहाल, और बाकी प्लेयर को मैं नहीं चेक कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आप लोगों का इंटरेस्ट है तो कमेंट करके बताना, मैं तब दिखा दूंगा, ठीक है, ताकि मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है,
मुझे नेमार चाहिए। नेमार है ही नहीं, कैसे खेल रहा है। चलो अभी मैच स्टार्ट करके इधर मिशन पे कुछ दिया है, वो चेक करके देख लेते हैं क्या दिया है। भाई कुछ दिया है क्या? ओ भाई ईद मुबारक साथ, इधर का ईद मुबारक से स्क्रीन दिया है, तो चलो सबको ईद मुबारक एडवांस। तो यहाँ पे और क्या वो कहूँ मैं आपसे से मतलब इधर लगे तो नहीं पसंद, दुख की बात है, तो बस दुख की बात है। मैच स्टार्ट किया जाए, एक क्या होगा देखा जाए। टूर्नामेंट खेलें फिर टूर्नामेंट, टूर्नामेंट में अभी मतलब क्या हुई तो हुई, मतलब को मजा आएगा टूर्नामेंट। इंस्टाग्राम सेंड अ लॉन्ग अरे नोटिफिकेशन। ठीक है चुप करो, सीरी है सही, स्टॉप कर जाओ। ठीक है चुप करो। सीरी क्या क्या बक रहा है यार, खुद बक रहा है। ओ अच्छा, मैं बंद नहीं किया, नोटिफिकेशन आना चाहिए, ठीक है रहने दो। ठीक है बंद करा दिया ना अभी, मैं उसको बोल के करा दिया ना गाइस बंद बोल के। तो ऐसा ही। चलो मैच स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कौन सा मैच स्टार्ट करे वो मेरे को आप लोग कमेंट करके तो बता तो नहीं पाओगे, इसमें आप लोग के पास उंगली तो नहीं है ना, वीडियो देख रहे हो उंगली नहीं, कमेंट तो नहीं करोगे, मुझे वो पता है। चलो मैं ही लगा देता हूँ, आप लोग क्या ही लगाओगे, मैं ही लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। बहुत दुख की बात है गाइस, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट नहीं करोगे तो कैसे मेरा चलेगा बोलो। आप लोग अभी नहीं चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा। कुछ भी है यहाँ पे, गेम प्लान पे चेक कर लो मेरे को कौन सा प्लेयर किया है मेरा कौन कौन है, पहले वो तो देखो। तो मेरा दोनों दोनों ये क्या कर रहा है, डुअल तो डबल डबल प्लेयर आ गया। ठीक से अच्छा नहीं भी है नहीं, मेरे तो मेरा अच्छा वाला नहीं खेल रहा है। एक सौ एक खेला अभी देखता हूँ यहाँ पर। ठीक है सब्स्टिट्यूट में कौन कौन से देखता हूँ, सब्स्टिट्यूट में कौन कौन, लेवेंडोस्की, अरे भाई नहीं, ठीक है वो ज़्यादा प्लेयर नहीं है भाई मेरे पास। मैं नया स्टार्ट किया भाई, ई फुटबॉल पीसी नया स्टार्ट किया भाई, पहले खेलता था, मतलब उतना अच्छा डिवाइस नहीं था मेरे पास, पीसी भी नहीं था, अभी भी अच्छा डिवाइस नहीं है, जो डिवाइस है बहुत मतलब चीपेस्ट बजट में है और उसमें काम चला ले रहा हूँ। हर कोई मिडिल क्लास गेमर ऐसे ही काम चला रहा है, काम चला चला के भाई इतना दिन बड़ा हो गया, आगे भी बड़ा हो जाएगा, और भी बड़ा, बहुत बड़ा। राइट, मेरे पास माइक्रोफोन रहता तो मुझे पता था और भी अच्छा स्ट्रीमिंग होता। दिक्कत की बात नहीं है, बहुत जल्द मेरे पास माइक्रोफोन आने वाला है, वो मैं लेने वाला हूँ। फ्लिपकार्ट से अभी ऑफर में चल रहा है भाई, 1500 करीब, वो 1500 का ही चीपेस्ट लेके काम चला लूँगा। वॉइस कैसा आता है उसका, मतलब ऐसा नाइट्रो का माइक्रोफोन है, नाम भी बता रहा हूँ आप लोगों को, कमेंट करके बताना कैसा है। पता नहीं उतना व्यूज़ तो नहीं आएगा मेरा लाइफ में, पर मुझे कॉन्फिडेंस होता है मेरा एक दिन आएगा, व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएगा, तब दुनिया मेरे को देखने के लिए तरस जाएगा भाई, ये बात मैं आप सभी से कह रहा हूँ। ठीक है तरस जाएगा। गेम अच्छा खेलता हूँ क्या नहीं खेलता हूँ मुझे नहीं पता, पर बात अच्छा बोलता हूँ, दिल पे जाके लगेगा पूरा। ठीक है चलो मैं स्टार्ट करता हूँ भाई, दिल टूट गया मेरा, इसलिए मैं स्टार्ट करके मैच खेलता हूँ, आप लोगों को भी मनोरंजन मैच दिखाता हूँ। गलत बोल दिया तो माफ करना, मतलब हिंदी में उतना थोड़ा कमजोरी है हम, थोड़ा बंगाली है तो वो बंगला बोलते हैं हम, इसलिए हिंदी थोड़ा दिक्कत होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना हो बोलते हैं उतना में चल जाता है। बाकी आप लोग बता देना गलत क्या बोल रहे हैं कमेंट करके। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, जुड़ने के लिए 3 व्यूज आया है अभी भाई, यही काफ़ी है मेरे लिए, बहुत थैंक यू सो मच। और भी आएगा, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर भी और भी आएगा। अभी थोड़ा माइक्रोफोन को ऑफ कर रहे हैं हम, ठीक है, तो कोई बुरा मत मानना।
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Time after time, it is a tale of the extraordinary, and we've come to expect the extraordinary from him. We have. Jim, how are you reading the formation? Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time you check, it'll be 4-5-1, and it's all to do with whether you've got the ball or not, and the wider attacking players being asked to apply defensive discipline too. When it does turn to a 5 across midfield, then the shape of this team takes on a much tidier, compact defensive look. We're underway. Challenge just a bit on the firm side. And he's found a way past. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Now it's Son Heung-min. Now that is tidy, really tidy. Son Heung-min really has the confidence and skill. He's going for goal! That's unlucky, just wouldn't come down. Oh, he got lots of power behind that, just couldn't quite get it on target. Rice to Havertz. Incapuyi. And it's Rice. And Gabriel, nicely spread. Threads one in. Madueke unable to make it happen for all his good intentions. That's an imaginative pass. And the ball is out of play. Timber. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too... He's having a go! And he has kicked it out somehow. Neymar is offering a wry smile there. Madueke stood up well to him there. That was somewhat off target. Gabriel. There they go, hunting again. Little doubt, that is a foul. And he's going to have his name taken. The player's body language here is a bit grim. It is not looking great at all. So it is still 0-0.
Modric tries to pass it through, and this is Messi. He has found the way through. Now there's a fine ball. Neymar! Goal! Paris Saint-Germain! And Paris Saint-Germain take the lead. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. Number 14, Neymar! 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 So we have the first goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Well, that looks a decent ball. It was indecision all round. They have to do a bit better than that. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And he has shown him a yellow card. Arsenal upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it's... Oh, what's he done? He's found some space. There's the shot! He scored! Such thrill, such noise, and how this matters! And it has to be said, an absolute gift. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly there. After 27 minutes is number 11, Lionel Messi! Lionel Messi! Lionel Messi! Things starting to look very comfortable. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Saliba. Well, there's the clearance. And it's Modric. Paris Saint-Germain have hit a quick-fire double here and are well and truly in the driving seat. He's got plenty of space out wide here. Rabiot. Neymar is onto this. And he's in on goal. Trossard. Havertz. They've got to make this nice and quick. And here's Son Heung-min. And it's Serginho. Modric. And this is Neymar. Takes a shot! And the keeper couldn't hold it. Well, now it's a race for the ball. Some front-footed pressing going on here. And here's Son Heung-min. Oh, that's a key interception. Rice. Paris Saint-Germain heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. He's got away. Chance for a shot! Just cruising! They are cruising! A quite incredible spell. They are flying.
He made it happen, squeezed through with sheer will and considerable accuracy. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. Son 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Messi gets into a good position. Not the most accurate pass. Madueke. Oh, he's felt that, hasn't he? And he's only too happy to take that back. Rice. 2 added minutes has been indicated. Out to the right. Rabiot spreads it out wide. And that's a throw-in. Rabiot. Oh, that is a good ball to find him. Neymar! And he hits the net. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. Really tidily gathered, and ultimately a more than tidy finish. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. And the first 45 minutes are up. Staggering, just staggering. Not in their wildest dreams would they have expected a half-time scoreline like this. Please welcome our lads to the field. Well, for me, it's a lead that's thoroughly deserved, Peter. They've been quicker to pretty much everything so far. The only thing you've got to wonder is, how taxing is this for the players? How long can they keep it up for? Are we going to see a fade in this second half? Paris Saint-Germain pretty much out of sight here. It really has been a one-sided game so far. And hostilities have resumed at the start of the second half. Modric. Paris Saint-Germain can breathe again, just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Messi. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Now it's Neymar. Madueke. Nicely aimed pass. And this is Neymar. Now he's got space here. No luck with that dink over the top. They've got to be quick moving this forward. Foot in. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Serginho gets good distance on it. Aimed beyond the defence. Can he finish? He's been taken down and the referee has pointed at the spot. Paris Saint-Germain present their opponents with the best possible chance here. A look of bemusement and dismay from the culprit, but the referee clearly thinks there was enough there for a penalty. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. And that's
time for a cool head, and that is precisely what he showed. Well, I'm not sure what body language the keeper was trying to read, but it didn't work. The goal scorer for Arsenal after 59 minutes is number 14, Gyökeres. They're still trying to make a game of this. Neymar under intense pressure. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. Neither of these two want to come off second best. Trossard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. 332. And here's Neymar. It's Neymar! He's got a goal! And with that, he takes home the match ball. A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. Paris Saint-Germain are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Oh, no, that was never going to make it. Rice. Upamecano. Arsenal have a free kick. He knows what's coming. A second yellow, and he's off. Well, the protest continues, but in the end, they are defending the indefensible. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Timber works it forward. That's a sharp pass. Cute ball now, how can he reach it? Neymar. That is lovely. Shot a goal! He has done it! How many? Just how many? The gulf in class is vast. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. 69 minutes is As if 3 weren't enough. This is nigh on utopian. Neymar. Things looking so easy, almost too easy here. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Zubimendi looking to play him in. Rabiot. And it's Neymar. Oh, he's found support out wide. Messi could try cutting inside here. He's had a shot! Oh, denied at the last. Well, it was going to take something a bit special from there, and that wasn't it. And there's a searching pass. He's having a shot! Trossard. That's good pressing, squeezing the play. Trossard. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Messi, can he get it through? You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Well, that tackle was certainly sturdy. And smartly reclaimed.
Oh, played through for the wide man. That's good play. Messi! Keeper always had the measure of that. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Serginho. Modric, who does have an assist to his name. The final 5 minutes. Gabriel calmly anticipates. Knocks it into space. Last-ditch defending, but that'll do. Engages and forces him off the ball. Some real chance! It's in! And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. 89 minutes is number 21, Son Heung-min. Gabriel into a minimum of 4 minutes additional time. Rabiot. Substitution. 4 added minutes has been indicated. Trossard. Koundé is the guilty party there. Well, the players are flocking round their fallen colleague and they look worried. Substitution in progress. Calafiori. And it's Rice. Well, that pass isn't the best. Modric. And he's intervened well there. And that is that. Paris Saint-Germain really have hit the heights. A tour de force that has left their opponents reeling. And that is what tends to happen when they do their thing. Neymar, very much the hero in this game. How do you look back on the game then, Jim? Paris Saint-Germain definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. Please refrain from parking outside this That's stadium. where we have to end it. Thank you From very me, much Peter for- Drury. तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैच खत्म हो गया भाई यहाँ पे। ठीक है, तो अभी फिलहाल एक चीज करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे 3 मैच जीतना पड़ेगा भाई, तभी जाके मैं राउंड 2 पे पहुंच पाऊंगा। क्या कहते हो आप लोग? तो हाँ, जब मैच स्टार्ट मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास माइक्रोफोन नहीं है इसलिए, और हेडफोन भी नहीं है, तो इसलिए मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैच खेल रहा हूँ मैं, तो आप लोग सिर्फ मैच का एंजॉय लीजिए, मेरा कमेंट्री तब नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मुझे स्क्वाड नंबर थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। ये अच्छा 8-3 है भाई। ठीक है, वो गेम प्लान में थोड़ा जाना पड़ेगा। ये रेड कर दिया भाई। चल इसका जवाब किसको लगाओ, इसको लगाओ, इसको 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 लगा दो क्या? इसको है भाई, और कोई हो गया? और कोई नहीं शायद। क्या करूँ या ना करूँ, देखना लगा दे रहा हूँ भाई। इसको लगा दे रही हूँ, थोड़ा उसको पावर भी दे देता है, ग्लूकॉन भी पावर देने पड़ेगा। और यहाँ पे से वो अच्छा एक बंदा को वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, किसी एक बंदे को इसको लेके जाएगा,
लेवेंडोस्की फिगा लेके और कोई लेके अंशुफाती फरहान टॉरेस गैब्रियल मार्टिनेज तेरे को लगेगा ठीक है भाई ठीक है हाँ, ठीक है चलो अभी इसको गेम करने से इसको गेम करने इसको कैसे गेम करेंगे ऊपर जाके ऐसे नहीं और ये हमारे क्या है टी जाके हाँ लेवल करना और लेवल को स्किप करिए बस चलिए सर भाई 97 किया चलो काफ़ी है काफ़ी है बहुत काफ़ी ओ और क्या करना है मेरे को गेम प्लान में जा रहे थे क्वाड नंबर परिचय 3 है गेम प्लान एडिट प्लान नंबर 5 से वैसे भाई मॉर्टिज को भी खेलता है क्या भाई मॉर्टिज का फेवरेट जर्सी नंबर क्या है 8 चलो इनके कुछ भी खेलो ना लेकिन इंडिया में खेलो वेलिंगम तो कौन से दिखता क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो मेरे को हाँ हैरी कैन इमबापे को से इमबापे 10 लेके खेल रहा है यार 10 लेके खेल रहा है अरे मेसी या नेमार है इमबापे 10 लेके खेल तो को 7 भी नहीं दिया चल 9 दे दिया इमबापे मोहम्मद साला तो ये मोहम्मद साला देखा जाएगा बाद में और नेमार वाजन नहीं तो देखो मैं 11 और मेसी को 10 मेसी को कौन खिला रहा है भाई 14 नंबर चल किसी को भी खिले ऐसे चलो और किसको इसको 7 दे देते इसको 7 7 किसको वेंडियस की फैक्ट्री में एक सारा खेलेगा 4 डिफेंडर और विकेट से भाई डिफेंडर को 14 खेलेगा क्या 4 खेल 4 भाई ठीक है चलो 7 नंबर सॉन्ग ह्यू मिंग को 7 में 7 बेलिंगम को 7 दे देते हैं बेलिंगम को थोड़ा थोड़ा बेलिंगम को थोड़ा बेलिंगम अच्छा खेलता है बेलिंगम को 7 इसको 7 अभी मैं तो चले बेलिंगम को थोड़ा गेम खेल लेता हूँ हाँ तो चलो ये भी ड्राइंग करता हूँ हो गया बेलिंगम 96 खेल रहा मतलब 100 खेल लेगा बेलिंगम हाँ भाई अच्छी खेल रही है बेलिंगम को लेकर आता हूँ इसको लगा मैकेल कौन है मैकेल जैक्सन हो जाए अच्छा हो गया क्लियर नहीं दोनों खेल लेगा काफ़ी है स्टेडियम कुछ कस्टमाइज पर रहने नहीं और कुछ नहीं चलवाना ऐसे में कुछ नहीं देखने का मेरे को ठीक है तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अभी तक 8 व्यूज़ आए हैं वही मेरे लिए काफ़ी है तो जो बंदे देखे हो प्लीज़ लाइक करो एंड कमेंट करके बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है लाइव स्ट्रीम मुझे तो लग रहा है शायद थोड़ा थोड़ा मेरा वो वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा है और किसी में प्रॉब्लम होता है कभी और अभी जा रहा हूँ मैं मैच को फिर से जाना होगा मुझे हाँ चलो टूर्नामेंट वाला मैच खेलना होगा दे रहा हूँ चलो स्टार्ट करके फिर जाके माइक ऑफ करूँगा बाद में माइक ऑफ करूँगा जब मैच स्टार्ट हो जाएगा तभी तक के लिए भाई मेरा कमेंट्री चालू रहेगा ठीक है एंजॉय करो आप लोग तभी तक के लिए और इधर मुझे गेम प्ले में जाने के लिए बोल रहा है ये बंदा क्योंकि ये बंदे को तो भाई रिजर्व से हटाना पड़ेगा ना अरे बंदे तू थोड़ा मेहमान नहीं तेरा अरे हाँ ऐसी कर गया एक तेरे बोल दो अर्जेंटीना अच्छा अर्जेंटीना की तरह इवन दिया अर्जेंटीना से खुद के समझ लेगा सर और ये वाले 98 तो उसको हटाते हैं इसको हटाता हूँ हाँ हाँ नेमा तो साइड में लेके आ रहा हूँ ठीक है
हाँ विजुअल शायद से मुझे बूस्टर खिलाना पड़ेगा, एक बूस्टर देना पड़ेगा किसी को। बेलिंगम को लेके आता हूँ यहाँ पे। हाँ ये सेट टू पे एक लाइन है कुछ लाइन टू इतने थे इतने मेरे प्लीज तेरे को नहीं ठीक कर रही सेंटर कर दिया हो गया चलो। हाँ हो गया अभी तू इधर सेंटर में एक सेंटर खुला है नीचे तक सेंटर कौन खुलेगा इसको अभी कहीं पर एम्बापे की है ना। अच्छा एक काम करता हूँ चलो फॉर्मेशन को मैं चेंज करता हूँ अभी फॉर्मेशन मुझे ना भाई वो मुझे अटैकिंग मिडफील्ड चाहिए। मैं यहाँ पे जाके मैं फॉर्मेशन चेंज करके लोड गेम प्लान अरे मतलब में जाना है फॉर्मेशन चेंज करना है देखो फॉर्मेशन चेंज और 4-4-2 नहीं 4-3-3 क्या 4-3-3 ऐसा नहीं चाहिए मेरे को और 4-3-2 नहीं ऐसे तो नहीं चाहिए फोर हाँ ये ऐसा चाहिए ये तो 4-1-2 हाँ ये वाला फॉर्मेशन मुझे मतलब सुपर अटैकिंग अभी हो गया चलो ये हो गया ना ये लोग डिफेंड में ये एक बंदा हो गया इसको मैं सेंटर कर दिए क्या है सेंटर तो नहीं हाँ हो गया सेंटर ये बंदा अच्छा खेलता है तो इसको मैं खिलाऊंगा नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा इधर का जो भी नहीं खेलेगा इसको हाँ ये खेल रहा है इधर खेलने दो एम्बापे को मैं पर ठीक है क्या करूँ अच्छा प्लेयर है वो खेल लेगा हाँ बड़ी मुश्किल है नहीं मान रहा तो मैं इस साइड पे भेज के आते हैं अच्छा भैया सही ठीक है और एक बार जाना पड़ेगा मुझे गेम खेलना क्योंकि इसको तो मुझे चेंज करना है सिक्योर इसको करो भाई एम्बापे को लेके अच्छा खेल लेते हैं ऐसा नहीं खेल नहीं करते चलो अच्छा फोन ना ठीक है चलो से मिलेगा काफ़ी है जितना है उतना काफ़ी है चलो अभी मैच स्टार्ट करते हैं भाई बहुत देर हो गई बहुत टाइम हो गया सॉरी भाई रेगुलर पे खेल रहा हूँ भाई कोई पूछे तो भाई पीसी में कभी खेल के बताना आप बिगिनर पे भी खेलोगे ना तो भाई बताना एआई बॉट है शायद बॉट तो नहीं है भाई ये ठीक है ओके सीरी स्टॉप ओके सीरी भाई सीरी चुप हो जाओ चुप हो जाओ तुम ठीक है तो गाइस मैच का मजा लो गेम खेलना और यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ ठीक है अभी जाके मैं वॉइस थोड़ा ऑफ कर दूंगा हाँ यार यूनिफॉर्म चेंज कर दे कमेंट करो जो बंदा देख रहे हो अभी तो उसको बस मैं बता रहा हूँ लाइक करो एंड कमेंट करो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आपको बहुत बहुत धन्यवाद है स्ट्रीम पे जुड़ने के लिए मेरा ठीक है तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ तो मुझे माफ करना मैं माइक थोड़ा ऑफ कर रहा हूँ आप मैच को एंजॉय कीजिए Welcome to those who have joined us all here on a Hello, beautiful, everyone, clear and evening. welcome to The Studio conditions 22. contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. And This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. The Signal Iduna Park, located in Dortmund. It really is a tremendous arena. And now, lining up from And the looking down the line, list of names, it does number look, Jim, as though it's going to be a 5-3-2. Well, it's an attempt, Peter, to put a solid bedrock in place and negotiate the game from there. If they can absorb what comes towards their box in the early stages, then the midfield can begin looking for more of the possession and can start thinking about a more probing influence on the contest. It all depends on keeping their goal intact, so they won't have to open up and indulge in taking risks at the other end. And already we're underway here. Oh, that is asking for trouble. And it's Rafael Leao! He's got away with one there. Modern football for you. You get zero time to think on the ball. Take too long, and that happens. It gets pinched.
Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is possible. And what's more, he brings out the best in his teammates. Yeah, I think he just gives them that confidence that they can overcome whatever the opposition throws at them, and he leads by example, of course, and will probably come up with something. Bellingham with a definite foul there. Bellingham. Modric. Neymar. Oh, that's nice. Now it's Modric. And here's Modric. And the assistant referee has his flag raised for offside. Modric. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to... It's Neymar! A collective sigh of relief from the defence. It's really well read here, but having done the hard part, he'll be slightly disappointed not to make more of it. Modric. Paris Saint-Germain are seeing more of the ball, but still aren't carrying much goal threat. And Tomori moved on forwards. In with the challenge. Neymar looking to run onto it. Could be danger here. Lovely bit of skill. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and he's gone for goal! And for a moment, time stood still. Salmakers. Lovely pass, but can he get there? Modric. Rafael Leao. Bellingham. It's a pretty loose pass. Passing is crisp and sharp. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Now it's Mbappe. He's gone for goal. That's a foul, no two ways about it. No second thought, a straight red card. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. And no, that was never going to make it. Bellingham. Now it's Mbappe. Now it's Modric. Tomori cuts it out. Ricci. Now it's Rafael Leao. And he's managed to get free. Lovely pass, but can he get there? Batasagi gets into some space. Well, that's not the cross he had in mind.
Now it's Messi. Well, that looks a cracking ball. Tomori attempts a clearance. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Artisaki. And it's Rabiot. That's Rabiot. Now he's got space here. And the ball is out of play. Jorginho. Koundé. And it's Messi. Now it's Mbappe. Modric. Knocks it out wide. And this is He's having a shot! Goal! Paris Saint-Germain! And Paris Saint-Germain take the lead. Terrific goal, what a super sharp finish. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. Number 8, Luka Modric. Paris Saint-Germain have fired themselves in front. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. Modric purring through the gears. Ricci. Messi. That's very neat. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Just a quick reminder Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Paris Saint-Germain have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. And the action is back on the way. A solitary goal, that has been the crucial difference. Messi. Bellingham. And Serginho. Modric. Rafael Leao. Ricci. Now it's Mbappe. And here's Messi. It's a throw-in. Modric. Modric. Mbappe. And the shot! Oh, he's managed to get it all wrong. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. It might not be such a bad idea playing this short and into feet. Absolutely, they're certainly not as big as those trying to stop them. Milan have the chance to go the other way.
Keeps him off it and wins back the ball. Oh, now here's an interesting matchup. Now then, clash of the egos. Oh, really good feet. Spread out to the left. Serginho charging forward down that flank. No way through, so back it comes. The attendance for this Nkunku, match was he's had it nicked away. 61,052. Bellingham, he's tried one! Oh, that is very close. Bellingham brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. Your impression so far, Jim? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. And here's Mbappe. He's free, he has got... Tries a shot! And it's in! Two up now, and they are cruising. And he stuck it away as if laser-guided. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. 65 minutes is number So that's 9. two now without reply. Mbappe. We're looking at a very different game now. The command has been established. Modric being hunted in packs. Yeah, it very much looks like this defence has learned from its errors now. Ricci. Well, that tackle was certainly sturdy. Well, no, that is pretty much the end of that. That pass isn't the best. And the shot! Oh, surely that deserved better. Oh, it was such a clever pass that flummoxed the defence, and it could well be revisited, this. Salmakers. And it's Ricci. Defending in numbers, sharp and uncompromising. Pass somewhat off target. And that's another good win of the ball. Salmakers. And that's the end of that. It all started well enough. Bellingham. Bellingham! Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, he's looked very lively. He really wants to put this game to bed. Bartasagi. Rabiot proves just a little bit too strong. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Okay, it didn't quite come off. The execution, I think, needs a retry, maybe with a better outcome. Serginho. Modric, given the lift of his goal. And it's made its way to him. Played out towards the right wing. Great chance! Just cruising! They are cruising! And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. The goal scorer for Paris Saint-Germain. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Paris Saint-Germain find a position of real strength now. Paris Saint-Germain are coasting towards victory. Mbappe, Modric, and that could set him on his way. Well read, and the danger is averted. Rafael Leao, Koundé, no unnecessary risks, and the game is petering out here. Nicely weighted ball.
Mignon gets his hands on it and the danger is averted. Can he spark a counter here? He's had a fair tumble under that challenge. And here's Messi. Can he get it through? Bellingham gets into a good position. Modric. And that has been cleared. There will be 3 minutes added time. And this is Jorginho. Oh, shooting chance! And the number on the board is 3. He won't be happy with that one. And that is that. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. The key characters glittered throughout and did what they did when required so to do. There could be only one outcome. Mbappe taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Paris Saint-Germain may not have finished with 11, but they have shown terrific spirit and they claim And the a win. quick reminder Well, today, that's what everybody, spirit... तो काफी अच्छा हुआ भाई, ये वाला मैच बहुत ही बढ़िया, मतलब टफ था। रेगुलर में ही देख लो आप लोग कितना टफ था, तब सोच लो प्रोफेशनल में कैसा होगा, लेजेंड में कैसा होगा। भाई भाई पीसी का ये आ गया ना, तो इसमें और कितना मैच खेलना पड़ेगा भाई, अभी कंप्लीट भी नहीं है, देख लो यार। मतलब भाई 1000 पॉइंट करना पड़ेगा, टोटल इवेंट पॉइंट मेरा 32 है, और एक मैच खेलना पड़ेगा हिसाब से भाई, और एक मैच खेलना पड़ेगा। चलो और एक मैच, अरे मुझे पीवीपी खेलना है, पीवीपी खेलना है भाई। ये एआई हो रहा है ना, अभी नेमार रेड कट खा गया, चलो नेमार को चेंज कर देता हूँ। नेमार ये वाला रेड कट खा गया तो क्या हुआ, मेरे पास दूसरा वाला नेमार है ना, वो खेल लेगा। एक से बढ़ के और एक, देखो मेसी का कलेक्शन देख लो भाई, टीम तो मेसी है मेरे पास, टीम ज्यादा अच्छा नहीं है तो मेसी देख लो। और अभी मुझे किसको लेके जाना है वहाँ पे, और एक बंदा था ना भाई, और एक कलुआ, कलुआ चलो तुझे खेलना है, कहाँ खेलेगा तू, इधर खेल। हाँ कलुआ, रूबन लिया अच्छा खेलता है, तू भी अच्छे खेलती है मुझे पता है, क्योंकि उसके बाद खेल ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, अर्जेंटीना अच्छा है, कोई शक नहीं है। इसको थोड़ा गेन करना पड़ेगा इससे, देख लेते हैं और इधर मार के गेन कर देता हूँ। क्या गेन होगा भाई पीडब्ल्यू, क्या ही गेन हो जाएगा। चलो, और पावर नहीं है तो इससे ज़्यादा गेन नहीं हो पाएगा, इसके बाद में करूँगा पड़ेगा, मतलब तो छोटा मोटा करके कुछ फायदा है क्या, और बार मार के ओह अच्छा ये तो हो गया भाई, आ जाओ हो गया, चलो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक से दो खेल रहा है। सरगिनो को मैं और बस हाँ, तो इसे मैं बूस्ट कर देना पड़ेगा, तो बूस्ट के साथ तो हाँ चलो ऐसा कर देता हूँ। रैंडम, इसे रैंडम में अभी काम चलाने के लिए बाद में मतलब देख के लगाना पड़ता है, जब आप लोग रहोगे कमेंट करोगे तो अपने आप लोगों से दिखा से लगाओगे। अभी कितना खेल रहा है, 102 ही खेल रहा है, मतलब 102 खेल रहा है तो 3 ही खेल रहा है, कैसे खेलेगा। पहले मैं नेमार के पास जाता हूँ, इसको अगर क्लिक करता हूँ, नेमार को थोड़ा गेन करना पड़ेगा मेरे, हाँ इतना गेन है, कितना गेन है उतना ही अच्छा है, हो गया 93 हो गया सब बढ़िया। 96 खेल रहा है, मेसी को थोड़ा गेम खेल रही है, एक मैच के लिए नेमार को खिला रहा हूँ, मेसी तो और वुड क्राफ्टिंग स्टेशन आना पड़ेगा, तो इसको भी रैंडम दे देंगे, मेसी का रैंडम लेगा फिर रैंडम दे दिया भाई। मेसी कितना खेलेगा, 101 ही खेलेगा,
ये भाई ये बंदा 103 चलेगा, 3 चलेगा, या कोई दिक्कत नहीं है, 103 चल जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मुझे लग रहा है ये वाला मैच खेलने शाबाद पीवीपी हो जाएगा। एक पीवीपी खेलना चाहता हूँ। ठीक है, अभी तब से वो मतलब चल रहा है, वैसा ही चल रहा है, सोच सकते हो आप लोग, जो सोचना है। स्टेडियम चेंज करते हैं, स्टेडियम में कोई नहीं देगा, नहीं देगा स्टेडियम पे तो ऐसा गेम पे क्या दिखेगा, स्मॉल स्क्रीन पे कुछ दिखा नहीं रहा, ये नहीं देगा भाई। अच्छा वॉल चेंज कर देते हैं, तो वॉल एक तो ही है, और क्या करेगा भाई, वॉल तो है ही नहीं मेरे पास। ठीक है नेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाए। ठीक है, हाँ तू लोग वाइट में, हम लोग ब्लू में हैं, देखता हूँ हम लोग है ना, हम लोग ब्लू में भी है। नेक्स्ट करता हूँ। चलो गाइस थैंक यू, अभी माइक थोड़ा मैं ऑफ कर रहा हूँ, मैच का एंजॉय लीजिए। So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Neymar surely. He has an array of skills that can elevate the quality of a match or change its course with a flash of brilliance. His talent can take this game to a higher level of excitement, and I hope it does. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. According to what we've been told, this is how it looks. It's a 4-3-3. Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time you check, it'll be 4-5-1, and it's all to do with whether you've got the ball or not, and the wider attacking players being asked to apply defensive discipline too. When it does turn to a 5 across midfield, then the shape of this team takes on a much tidier, compact defensive look. There's the whistle, and here we go. And here's Mbappe. Well, that's a... And Messi! Goal! Paris Saint-Germain! And the game springs instantly to life. That's the purpose and intensity they showed from the first moment. They really did fly out of the blocks here. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's expertly finished, and he's done that so often. I doubt very much that this was in the script. Shaw. Now it's Mbappe. And it's Modric. Jorginho. Bellingham. Now it's Mbappe. Mbappe driving forwards. Opts to play it back. Plays the ball back. Spread out to the left. Played back in. Gives it back.
He's in a great position here, and the shot! It's a loose ball. Oh, he's been caught on it here. That's a risky ball, you've got to say. Ahmad. Great ball, and he's decent chance! And that is wildly off target. I just wonder what was on his mind there. Should have put his foot right through it. It's not an especially good pass, that. It's really well cleared. They get a throw in. Jorginho. And he's had a hit! There was plenty of power on that. Paris Saint-Germain with the corner, there first. Diallo clears. Paris Saint-Germain are very much in charge here, dominating possession and a goal to the good. And it's Modric. And this is Neymar! And the ball, that's another chance! Oh, taken with style! Two to the good, and they are purring, absolutely purring. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky, it'll come your way. And yes, it's him again. Paris Saint-Germain are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Serginho is one of the key ingredients in the team's attack. Turns back here, probably the best option. Modric. And here's Mbappe. Bellingham. Oh, that's wonderful alertness. Martinez. Here's Matheus Cunha. That's a little off target. Bruno Fernandes. Ahmad. And he's managed to get free. And it's Neymar. He's looking wide. He's got away. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had... He's going for goal! The crowd reaction tells you just how close that was. He overcooked that one, aiming for perfection, and he got it slightly wrong. That'll be a throw. Bruno Fernandes. And he's had it nicked away. Neymar. Bellingham. He's in a good position here. Bruno Fernandes. Now it's Matheus Cunha. Bops him off it and wins back the ball. Well played. That has snuffed out the danger. Maguire. And it's Casemiro. Now Menu.
Modric. There's the shot! Superb by Modric! He's got himself an absolute peach. And they are pulling clear here. He made it happen, squeezed through with sheer will and considerable accuracy. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. Luka Modric. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Casemiro pinches it off him. That is good alertness. Menu. Out to the left it goes. Paris Saint-Germain looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Can he get on the end of this? Neymar! They've got to be quick to recover this. Matheus Cunha. And there's his chance to lead the counter. Threads one in. Great chance! Matheus Cunha. Neymar. Now there's a fine ball. Back in possession and ready to go again. Shot. Can he finish? Yes! It had to come. It just had to come. He had to have his say. What a delicious finish. That is immaculate. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Paris Saint-Germain are having a ball here. That's been cut out, well played. Casemiro. Matheus Cunha. Jorginho gets across to intercept that. And that'll be the final action of the first half. Well, what a half they've had. Cruising to victory, and it's only half-time. Astonishing. Everybody, to make sure Paris Saint-Germain really are in control here. They've done exactly what they set out to do. There's a genuine flow about their football, and some of the stuff they've played so far has been great on the eye. Paris Saint-Germain are looking awesome. Going into half-time with a lead then that is surely insurmountable. There's the start of the second half. Ahmad, foot in, aims beyond the defence. And this is Messi. He's had a shot! Oh, denied at the last. Paris Saint-Germain certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. This is their second corner of the game. Shaw is there, and he can get that clear. And it's Modric. Takes a shot! Oh, he's kept it out. That's a great save. Oh, it's a brilliant effort, you have to say that. He clearly wanted to do it in style. So, third corner of the game. Pulls it back. He rises! High and ultimately harmless.
Menu. And it's Bruno Fernandes. Mbappe. And it's Jorginho. Over to the left. Neymar. Can he finish? And that has flown over. What a fabulous run. OK, it didn't come off in the end, Peter, but that would surely spark some kind of response from those around him. Maguire. To Martinez. Casemiro. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. It's played through for him. And into the grateful arms of the keeper. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. The attendance for this match was 62,005. Neymar being hounded, manhandled at times. Yeah, they didn't smell the danger early enough, but I suppose better late than never. Bruno Fernandes. This might spell danger. Tries a shot! They've done it! And this is getting ridiculous. Borderline crazy. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. After 64 minutes is number 9, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Things looking so easy, almost too easy here. Menu. Bruno Fernandes. Oh, that's well spotted. Jorginho. Played out to the left flank. And it's Bruno Fernandes. And that has left him in a heap. And this is Messi. He's picked his way through. Goes for a shot! Goal! And the chasm continues to widen. A brutal statement that underpins where these teams are at. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. Number 7, Bellingham. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Mbappe is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Bruno Fernandes. That a foul? Yes, the referee's given it. And he has shown him a yellow card. Yeah, and I think the ref has just reminded him that he'd been warned earlier. Well, what goes through a player's head at times like that is a mystery to me. Menu. Just about up to 75 minutes. Neymar. Now he's off and running. If they want to counter, they could do with more speed. Always onto this. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Koundé. Bellingham. That has been slung wide. Serginho. He's found a way through. Plays a sharp little ball here. Oh, shooting chance! It's a goal! And the headlines continue to get darker and darker. I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. 79 minutes is
And now he has two. Neymar! 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 So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, to wait until now to make this change seems a bit baffling. He's expecting the miraculous to turn this around from here. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Manchester United disappointing in the end there. They lack urgency. Shifted it to the flank. Menu. He's had a fair tumble under that challenge. No, again there's no way through. Now it's Messi. And it's Bellingham. Tries to pass it through. Manchester United making another change here. Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though, not quite able. Not the most convincing of passes. And he's managed to get rid. Matheus Cunha. And it's Menu. Now it's Mbappe. Maguire, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Played out wide. There will be 5 minutes. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Jorginho, it's a pretty loose pass. Jorginho is always scanning the pitch for targets. And he shoots! He's got a goal! And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. Well, this is turning into a real hammering now, Peter. They're demoralised. Number 9, Kylian Mbappe. Kylian Now it's Messi. Now it's Mbappe. And that pass just didn't quite work. Martinez. Played to Casemiro. And that is as far as it goes. Paris Saint-Germain really have hit the heights. A tour de force that has left their opponents reeling. And that is what tends to happen when they do their thing. तो गाइस ये देखो कंप्लीट हो गया। तो राउंड 1 कंप्लीट हो गया। अभी राउंड 2 मैं खेलने वाला हूँ। राउंड 2 खेल के देखता हूँ कैसा लगता है। ठीक है, कितना टफ प्लेयर आता है। राउंड 1 में तो भाई एआई का साथ मैच हो रहा था। राउंड 2 में तो पीवीवी होगा। पी पी पीवीपी मतलब प्लेयर वर्सेस प्लेयर। ठीक है, तो अभी राउंड 2 पे मैं देख रहा हूँ। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे यहाँ से स्किप करने से नहीं होगा। एक सेकंड रुक जाओ गाइस। देख रहा हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर आरटीएस गेमिंग। और विदु गाई तो मेरा ही आईडी है भाई। ठीक है, वो वहाँ से मैं थोड़ा ये कर दिया, तो चेक कर रहा था वहाँ से मैं कैसा आ रहा है क्वालिटी और वॉइस कैसा आ रहा है। ठीक है, तो आरटीएस गेमिंग थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अभी जो बंदा देख रहे हो, कौन देख रहे हो पता नहीं, जो बंदा देख रहे हो थैंक यू भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, मेरे स्ट्रीम पे ज्वाइन होने के लिए। एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, कोई पैसा नहीं लगेगा भाई लाइक कमेंट करने के लिए। तो चलो गाइस मैं देखता हूँ अभी यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीन कंप्लीट हो गया। हेलो, कंप्लीट हो गया भाई। तो राउंड 2 यहाँ पे
देखो, राउंड 2 खेलने से पहले भाई एक चीज़ मुझे लेना है, ठीक है? राउंड 2 खेलने से पहले मुझे यहाँ पे जाना है भाई, देख लो। 1 सेकंड रुक जाओ, देखता हूँ टेम्परेचर कितना हीट दे रहा है, उतना हीट नहीं दे रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मेरे स्ट्रीम पे जॉइन होने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और अगर आप देखना चाहते हो और अनदर लाइव गेमिंग वीडियो ये सब वगैरह-वगैरह, तो मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो जल्दी से जल्दी भाई, ठीक है? यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे क्या करना है भाई, मिशन पे जाना है, थोड़ा मिशन पे जाके थोड़ा मिशन मिशन से कुछ मिशन से कुछ लेना है भाई, ये सब ये ईडन हज़ार्ड को भी मिल गया। देखो ईडन हज़ार्ड आ गया, यहाँ पे एक प्लेयर आ गया भाई। मेरे पास तो कोई मतलब अभी नया आईडी है, एकदम लॉगिन किया, नहीं तो फिर पुराना आईडी है, इतना खेला ना, डिवाइस नहीं था इसका, नहीं खेला खेला, अभी खेल रहा हूँ। चलो इधर जाता हूँ, इधर से भी ये वाला कलेक्ट कर लेता हूँ। हो गया फिर वो यहाँ पे मिलने देगा, मतलब ये हो जाएगा, मिलने देगा, यहाँ से भी इसको मिल जाएगा भाई, मिल गया, चलो डन। और कौन कौन दे रहा है मैं इसे देख लेती हूँ, कौन कौन है ये इधर से, शायद इधर से भाई पैसा देगा, सब पैसा देगा, चलो पैसा ही दे दिया पैसा, लिखा। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, सोच कर हो गया। इधर जाना पड़ेगा मेरे को, जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा इधर से। जब आगे मिशन पे जाके सब कंप्लीट हो गया, सेकंड प्लेयर में चाहता हूँ, प्लेयर में जाके देख लेते हैं यहाँ पे ऐसे। हाँ, अभी देखने के देखो अभी मज़ा आएगा, तो कार्ड देखने में मज़ा आएगा, देखो एम्बापे, मेसी है, ये वाला मेसी सबसे ज़्यादा है क्या? ओ मैं गलत वाला मेसी को पावर दे दिया, चलिए ये वाला मेसी को भी बूस्टर दे देता हूँ, ठीक है? चलिए इसको भी दे देता हूँ बूस्टर, बूस्ट मिल जाता है और इसको लेना है तो ये तो इतना हो गया, चलो ले लिया हो गया, ठीक है। चला है यहाँ पे विलियम, देखो कौन कर दिया मैंने, देखो प्लेयर दिया है, ये नहीं सब कुछ हो रहा है, सब अच्छा इसको तो बड़ा नहीं पाऊंगा, देखो लेवल कहीं नहीं, पूरा एक थोड़ा एक प्रॉब्लम हुआ था, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो नीचे हमारे यहाँ वाला है, अब कुछ नहीं मिला, ठीक है अभी चलो पीवीपी खेलता है, मैच स्टार्ट करता है, मैच हो जाता है, देख लेता हूँ, और कोई नहीं, इवन हजरत को मैं यहाँ से जाके गेम प्लान से ही ला लेंगे, ठीक है? तो ये हजरत 50 गोल्ड मिल जाएगा, ये वाला खेलने से 50 गोल्ड मिल जाएगा, चलो ये वाला जीतने को पड़ेगा भाई, दोनों मतलब सेकेंड राउंड पे दोनों स्टेज है, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, मतलब ये मतलब वो प्रॉपरली बोले तो सेकंड राउंड पे दोनों राउंड है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, फिर आएगा थर्ड राउंड, वो वाला बहुत टफ होता है, चैंपियंस वगैरह वगैरह टीम आ जाता है। ठीक है ओ बाबा, ये तो यहाँ से तो भाई किसको खिलाओ किसको नहीं खिलाओ भाई, ये देखो, अरे सब यही टीम देगा तो मैं किसको खिलाऊंगा भाई, चलो भाई इतना सारा प्लेयर तो नहीं खेल पाएगा, मुझे लगा भाई तो ये खेल पाएगा, इनको खिला लेता हूँ, टॉप 11 तो खेल पाएगा भाई, टॉप 11 खेल लेगा यहाँ पे, फंडा होता है बहुत जन को पता नहीं भाई, ये होता है भाई, तुमको देता है टॉप 11 में टॉप, तुम अपने टीम का 12 या 13 प्लेयर रख सकते हो, अभी कौन सा मेसी को खिलाएगा, ये वाला मेसी को खिला लेता हूँ, ठीक है चलो ये वाला मेसी को ले लिया, अभी एम्बापे को भी लेना है, एम्बापे को राइट साइड पे खेलिए, मेसी को लेफ्ट साइड पे खेलिए, फिर मिडिल में से इधर से जाके इधर से जाके जैसे सेकंड स्किल स्किल लेते हो, इधर से जाके दोनों जो कि दोनों हैं, क्या करो इन दोनों को, क्या करो इन दोनों को भाई, कुछ नहीं करने का, ठीक है? तो यहाँ से इसको भी हटा के
इसको तो बता देता हूँ मैं तो ये इंडियन इंडियन आज़ाद खुलाना पड़ेगा ऐसा तो खेल रहा है कोई है नहीं खेल पाएगा वो यहाँ पे ये मैदान नहीं खेल पाएगा ठीक है तो इधर ना तो सब्सिट्यूट नहीं हो जाएगी इधर जाएगा और ये कौन है भाई इसको हटा के बिलिंग हमको लाना पड़ेगा ये बिलिंग निकालो इसको तो भाई नहीं बढ़ा पाऊंगा ये कैसे बढ़ाऊंगा इसको मेरे को इतना पॉइंट नहीं है छोटी नहीं देखो छोटी है कोई दिक्कत नहीं है बिलिंग हमको कहाँ बिलिंग 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 देखा बिलिंग हम आ गए इसको बिलिंग में बिलिंग में आता है इसको इसको खिला लेते हैं इसको मेरे डिफेंस को स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा भाई डिफेंस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा दोनों खलुआ को खिला लीजिए खलुआ तो नहीं खेल पाएगा चलिए देख खेलेगा बिलिंग को जगह बिलिंग को जगह में खुद खेलेगा खुद खेलेगा उधर कोई नहीं खेल पाएगा फिर लेट तक नहीं चलेगा उधर ठीक है लेट तक नहीं खेलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो चल रिबन दिया आ जाएगा पहले तू भी आएगा और इसको लगा देते हैं इसको कौन आ रहा है चेंज कर लेता हूँ यहाँ से जाके इधर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया भाई अरे मेरा राइट बैक कहाँ गया है कुंडल जा मैदान में जा सब पे कुंडल बूंदल ठीक है कुंडल और किसको लेना है यार किसी को लेना है इंडियन वाला सेंटर बैक को खुला लीजिए ठीक है बाद में देखा जाएगा इसको मोहम्मद साला को भी रख लेते हैं टीम पे काम पे आ जाएगा मोहम्मद साला को टीम पे रख लेता हूँ ठीक है इसको जगह रख लेता हूँ इसका मैं जाके और किसको किसको रखना है देख लेता हूँ और किसको किसको रखना है भाई इसको भी रख लेता हूँ ये भी काम में आ जाएगा ये बहुत अच्छा खेलता चलो राइट बैक ये तो इसको नहीं चाहिए चलो इसको नहीं चाहिए और इधर में जाके लास्ट एक प्लेयर को लेना है इसको लेने के बाद मैं स्टार्ट करूँगा किसको लेना है भाई देखिए अच्छे से देखिए किसको लेना है नहीं लेना हाँ जो काफ़ी ठीक है हैरी केन को लगा लो क्या हैरी केन को हैरी केन से ज़्यादा अच्छा हिंदी खेलता है हिंदी बच्चा है बॉल लेता है हिंदी को ला लो ठीक है तो अभी इन बार के खेल रहे हैं यहाँ पे देखता हूँ अभी होता है या नहीं होता क्रॉस आ जाएगा तो नहीं होगा हाँ देखो क्रॉस आ गया 11 मोर प्लेयर्स और मोर प्लेयर्स और भी 11 मोर प्लेयर्स का मतलब चलो और भी 11 प्लेयर्स मांग रहा है यहाँ पे मतलब सब्सिडी में इसको मतलब मैं 2 3 4 प्लेयर खिला पाऊंगा क्या 3 4 प्लेयर ही खिला सकता हूँ शायद से लग तो रहा है मिलियन हजार बेलिंगम तो केवल ठीक है पैसा जाएगा बाद में जो मिला सही चल रहा है हाँ, चलो अभी लेकिन अगर और 11 प्लेयर मांगता है तो 11 प्लेयर तो कहाँ से लाएगा और नमस्कार पूरी है ठीक है तो देखता हूँ और कितना प्लेयर मांगता है ये तो कभी राइड हो गया हाँ अभी राइड हो गया अभी राइड हो गया देखो यहाँ पे देख सकते हो ना आप लोग ये देखो ग्रीन टिक दिख रहा है कैसे मार्क करके दिखा मार्क करके दिखा नहीं सकते हैं तो मैच स्टार्ट करने से पहले रुक जाओ यहाँ पे मुझे फॉर्मेशन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा फॉर्मेशन में वही वाला फॉर्मेशन में खिलाऊंगा तो मेरा ठीक है मेरा वाला फॉर्मेशन है और इधर इधर हैजा को थोड़ा इधर लेके इधर लेके ये होगा तो खेल लेगा कम से कम एक सब्सिट्यूट को रखना चाहिए इसको रखेगा देखने रीजन है किसी बंदे को रख लेता हूँ इधर जाकर इधर इधर किसको रख लेगा इसको नहीं रखा है हाँ इसको रख लेते हैं और किसी को नहीं चाहिए मैं भी होता हूँ काफ़ी
देख लेता हूँ मुझे टीम के साथ में कुछ स्क्वाड नंबर फिक्स कर लेता हूँ। मुझे बंदी स्टार मिडफील्ड है टीम में ऐसा 17,000 सी है इसका। अगर कहीं एड्रेस का भी चेंज हो गया तो नहीं हो जा रहा। मुझे तो नया काम हो गया भाई। मुझे 9 महीने थे इतना तो नहीं निकले ठीक है। बाकी सब परफेक्ट है एकदम परफेक्ट है। तो मैच स्टार्ट करते चलो 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 मैच अभी स्टार्ट कर लेता है। बहुत टाइम हो गया तो मैं कुछ जाता हूँ यहाँ से चलते हैं यहाँ से। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ देखता हूँ क्या होता है। Find someone मैच मेकिंग प्रोग्रेस। तो मैच मेकिंग प्रोग्रेस दिखा रहा है अभी यहाँ पे चल रहा है मैच मेकिंग। तो आप लोग का कौन सा प्लेयर फेवरेट है फुटबॉल का कमेंट करके बताना ठीक है गाइस। तो मैच चलने दो तब तक के लिए तो मैं म्यूट कर रहा हूँ। एक बंदा टीम पे ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग भाई। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कर दो कमेंट कर दो और मैच स्टार्ट होने ही वाला है। तो मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बट मैं कर देता हूँ। ओपोनेंट का एक सेकेंड ओपोनेंट का हाँ यहाँ पे एक मुद्दा आएगा वो चीज़ है ओपोनेंट का चेक करना भाई टीम का। वो गेम तो इधर से तो गेम प्लान देखते ना गेम देखते हैं। ओ अच्छा गेम चेंज कर सकते हैं गेम भी नहीं चेंज ठीक है तो गेम नहीं चेंज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। गेम प्लान देखना है उसका गेम प्लान में कौन कौन है मतलब हमारे पास गेम प्लान यहाँ पे मेरा गेम प्लान है ओपोनेंट का ये देखो ओपोनेंट का गेम प्लान देखो भाई। अरे बाप रे क्या प्लेयर लेके आया है भाई तो टकला गोलकीपर है और बाप रे बाप बाप रे क्या होगा भाई मैच क्या लगता है आपको जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा देखा जाएगा वो मैच में कैसे होगा। चलो अभी के लिए माइक थोड़ा ऑफ कर रहा हूँ फिर ऑन करूँगा। Well, the premise of the tournament is simple. Every team, of course, is striving to make the latter stages. That's where they all want to be. No doubt these two harbour very similar ambitions. A good show here, absolutely crucial. The famous yellow wall stands tall. This has to be one of the most iconic places in European football. If you're just joining us, we are already underway. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is possible. And what's more, he brings out the best of his teammates. Yeah, I think he just gives them that confidence that they can overcome whatever the opposition throws at them, and he leads by example, of course, and will probably come up with something. And the finish!
A real chance and a real let-off. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. That pass isn't the best. It's gone in! He's put through his own net! And there you have it! Who saw that coming? Who saw that coming? There's a definite sense of anticlimax here with the game ending in such a manner, but it's a result everyone will take gladly. Such is the unpredictability of the sport. In time, it'll just be remembered as another win. And all that remains for me is to thank Hello, Jim everybody, Beglin. and That's it from please us join me tonight. in A wishing very good happy evening to wedding one and all. anniversary for one of our fan club members. क्या हो गया भाई? देख लो भाई, मैं तो कुछ नहीं किया भाई। ये बंदा खुद ब खुद गोल मार दिया अपना गोल पोस्ट में, मतलब अपना गोल पोस्ट में। हाँ, तो मार के भाई खुद ही हार गया। उसको खेलने का मूड नहीं था शायद से, या फिर कुछ ट्रिक कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है मिशन वगैरह है शायद से। ठीक है, वो हो सकता है मिशन कंप्लीट कर रहा है, जल्दी से यहाँ पे वो मैं गोल खा रहा है और कंप्लीट कर रहा है। ये भी हो सकता है। तो चलो नेक्स्ट मैच कैसा होता है वो देखते हैं हम। यहाँ पे गाइस नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं, फिर से नेक्स्ट मैच जीत गया भाई, बिना खेल के मैच जीत गया वो। चलो बहुत बढ़िया है, बिना खेल के मैच जीत गया यहाँ पे। नेक्स्ट मैच कर रहा हूँ उधर, तो देखता हूँ क्या होता है नेक्स्ट मैच के लिए उधर। चलो चल सी इवन कंप्लीट दिखा रहा है भाई। देख कंप्लीट हो गया चैलेंज। ओ राउंड टू का राउंड वन कंप्लीट हो गया, अभी राउंड टू का राउंड टू खेलना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो राउंड टू का राउंड टू मैं अभी, चलो राउंड टू का राउंड टू ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जो बंदा देख रहा है अभी भी, उसको बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। और प्लीज़ आप कहाँ से देख रहे हो वो कमेंट करके बताना। मतलब इंडिया से हो या इंडिया का बाहर से हो। इंडिया का बाहर से होगे तो मेरा लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चलो नेक्स्ट मैच करते हैं। यहाँ पे देखता हूँ बाद में हिंदी में करके वो चेंज करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। हाँ मैं कर देता हूँ। चलो देखता हूँ ये बंदा कैसा आता है भाई। यहाँ पे बंदा जीतना चाहता है, जीतने के लिए पागल हो जा रहा है, और वो बंदा भाई मैच को लीव कर दिया, मतलब लीव भी नहीं किया, कोई खा के हार गया। खुद का गोल पे खुद मार दिया गोल, और गोल खा के हार गया। चलो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। मैच मेकिंग प्रोग्रेस दिखा रहा है, मैच मेकिंग प्रोग्रेस हो रहा है। हाँ नहीं इधर कंटिन्यू कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंटिन्यू 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 आ जाएगा जल्दी। जल्दी जल्दी आ जाएगा, इतना मतलब टाइम नहीं है। नेटवर्क थोड़ा थोड़ा ठीक है, इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ठीक है। कोई बंदा CV20, hey bro, I am experience a lot of lag while playing on Steam on my PC, is there any reason for this? ब्रो इंग्लिश वो, ब्रो मुझे थोड़ा इंग्लिश है, लिटिल बिट टू इंग्लिश। सो मैं मुझे तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Explain a lot of lag while playing on Steam on my PC. Is there any reason? So, bro, thank you so much for watching CV20. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। So please bro, CV20 comment your PC name या डिवाइस नेम, डिवाइस सिस्टम, कमेंट कमेंट करो भाई। ठीक है, चलो यहाँ पे मैच भाई इधर क्या हो गया, टू मैच करना पड़ेगा फिर से मेरे को। चलो यहाँ पे टू मैच करते हैं। तो हाँ ब्रो इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आता है, बट मैं बता रहा हूँ तुम्हारा क्यों लैग हो रहा है। मतलब मुझे तो जानना पड़ेगा कौन सा डिवाइस है तुम्हारा, पीसी है या लैपटॉप है। डिवाइस कमेंट करके बताओ भाई प्लीज। ड्रॉप द कमेंट डिवाइस नेम। सॉरी दैट्स में मुझे इंग्लिश थोड़ा उतना अच्छा नहीं आता है भाई, थोड़ा थोड़ा आता है, बोल नहीं पाता हूँ। माफ कर देना किसी अति, मुझे माफ कर देना भाई, माफ कर देना। ठीक है। हम्म, is there any reason for this? Okay.
So many reason, bro. CB20. Hello, CB20. Are you hear me? Hello, CB20. Are you hear me? Your PC lagging problem. So many reason for this. Windows 11 PC. अच्छा ओके ब्रो RTX 2060 सुपर थैंक यू सो मच फॉर कमेंट इतना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई सपोर्ट करो इतना बाहर से देख रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है मेरा जितना होगा मैं उतना हेल्प करूँ करूँगा भाई तुमको ठीक है तो RTX 2060 सुपर है तुम्हारा Windows 11 PC है बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं इधर मैच भी स्टार्ट हो गया तो आई थिंक मैच का टाइम में मैं तुम्हें रेस्पॉन्स नहीं कर पाऊंगा उसके लिए मुझे माफ कर देना अगर कुछ बुरा लगा तो माफ करना भाई तो ठीक है आरटीएक्स 20 सुपर में तो लैग नहीं होना चाहिए भाई तो गेम लैग कर रहा है मतलब आपका गेम लैग कर रहा है या फिर मतलब स्टीम वो एप्लीकेशन लैग प्लेटफॉर्म लैग लैग कर रहा है कौन सा हाँ तो यस 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 मतलब 2060 सुपर में आरटीएक्स 2060 सुपर भाई नया टेक्नोलॉजी है भाई एकदम बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी है उसमें तो भाई अटकने का कोई चांस ही नहीं है भाई आप 60 एफपीएस में खेलोगे तो स्ट्रीमिंग प्लस गेमिंग दोनों करवा देगा मैं भी खेल रहा हूँ भाई आरटीएक्स 3050 में 2060 में नहीं खेल रहा हूँ 3050 में खेल रहा हूँ 6 GB वी रैम है तो आपका कितना वी रैम आता है वो आप कमेंट करो मुझे इंटरनेट इज गुड हाँ इंटरनेट इज गुड बट अच्छा तो समझ गया इंटरनेट इज गुड आपका इंटरनेट गुड है फिर भी आपका लैग होता है इशू होता है तो इसका मतलब आपका डिवाइस में स्टीम प्लेटफॉर्म का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसको देखना पड़ेगा ठीक है एक काम करो ब्रो क्या प्रॉब्लम हो रहा है मेरा मैं यहाँ पे आपको मेरे यहाँ इंस्टाग्राम का आईडी दे रहा हूँ दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी स्ट्रॉन्ग वीडियो एंड एक सेकंड ठीक है वहाँ पे मुझे आपका प्रॉब्लम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजो या फिर वीडियो करके भेजो मैं देख के जितना हो सके उतना सॉल्व करने का कोशिश करूंगा ठीक है मेरे से जितना हो पाएगा उतना करूंगा द स्टीम रन इन द बैकग्राउंड कुड यू शो मी योर स्टीम पेज भाई हाँ ये शो कर सकता तो बड़ा उसके लिए मुझे अभी बहुत सेटिंग ऑफ ऑन करना पड़ेगा तो ठीक है तो मैं यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी ड्रॉप कर रहा हूँ ठीक है इंस्टा आईडी है वीडियो गेमिंग ठीक है इंस्टा आईडी यहाँ पे डीएम कर सकते हो तुम मेरा विदु गेमिंग पे विदु गेमिंग पे तुम मेरे को डीएम कर सकते हो भाई मैं यहाँ पे एंड पिन कर रहा हूँ ये देखो ये वाला पिन हो गया मेरा इंस्टा आईडी विदु गेमिंग यहाँ पे जाके देखो यही वाला डीपी रहेगा मेरा 32 GB रैम है भाई आपका ठीक है चलो मैच स्टार्ट होने वाला है अभी मैच पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं वो चैंपियनशिप खेल रहा हूँ मतलब भगवान से थोड़ा प्रे कर लो भाई चैंपियनशिप जीत जाऊं तो बहुत अच्छा होगा ठीक है थैंक So यू it सो is मच फॉर that time वॉचिंग भाई again. सीबी Every 20 team looks to मुझे write जितना its हो own सकता है special मैं उतना script. बता रहा हूँ Moments आपको like जितना this are नॉलेज to be savoured. ज़्यादा Hopes are नहीं high. उतना A good start. नॉलेज नहीं That है is what they all तो मैं want. देखूंगा जितना हेल्प कर सकूंगा वहां से कर दूंगा The ठीक है famous आपको इंस्टा yellow आईडी दे wall दिया वहां पे stands जाके tall. आप This has to डीएम be करो one मेरे of को the most ठीक है iconic places in European football. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ओके चलो मैं स्टार्ट करते हैं अभी पहले So it's down to business here. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is possible. And what's more, he brings out the best in his teammates. Yeah, I think he just gives them that confidence that they can overcome whatever the opposition throws at them, and he leads by example, of course, and will probably come up with something. Back into the middle. Anton can get it clear. Well, that tackle was certainly sturdy. That's a foul, no two ways about it. Well, it's not taken him long, and that's going to be a booking.
Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Serginho with the slide tackle there. Now it's Mbappe. Neymar, foot in. A heavy challenge. Oh, it's come loose. Aimed beyond the defence. He's found the... It's Neymar! Oh, he's won it! They willed it, and it happened! And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. And with that, the end. All over in a flash. Wow. Borussia Dortmund really went looking for it, didn't they? And this was the reward their approach warranted. This was a game which you sensed from very early on that there could only be one winner, and so it turned out. A fantastic performance on all fronts, though. कमेंट करो और लाइक That's करो it एंड for शेयर tonight's करो match, भाई so it just और थोड़ा remains सा for me to सपोर्ट thank करो Jim Begden तो alongside me and to wish CV20 you अभी all भी आप a देख लो very अभी good हेयर मी evening. CV20 प्लीज कमेंट CV20 आर यू हेयर मी आप मुझे सुन सकते हो क्या अगर आप देख रहे हो स्ट्रीम पे बने हो तो कमेंट करो CV20 मैं आपको कुछ बोलने वाला हूँ सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन सा कंट्री में रहते हो कौन सा कंट्री है आपका मतलब ठीक है चलो अभी यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ नेक्स्ट करके नेक्स्ट 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 हो गया नहीं अरे वाला इवेंट कंप्लीट हो गया और एक मैच खेलने का मन हो रहा है भाई वो पीवीपी बहुत मजा आ रहा है भाई मतलब सच में इतना मतलब कभी सोचा नहीं था मुझे लग रहा था ग्लिच ग्लिच वगैरह वगैरह होगा लैग भी करेगा तो ग्लिच वगैरह लैग वगैरह कुछ नहीं हुआ ठीक है तो बहुत बढ़िया चल रहा है बढ़िया चल रहा है और ये वाला इवेंट भी कंप्लीट हो गया थैंक यू सो मच भाई जो बंदा मुझे आके देख के सपोर्ट कराएगा कंप्लीट करवा दिएगा इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया तो चलो अभी जाता हूँ मैं यहाँ पे जाके थोड़ा राउंड 3 अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ राउंड 3 कब स्टार्ट होगा कंडीशन नहीं है रैंकिंग इवेंट तो दिखा दे रहा है कंपटीशन शेड्यूल 02/12/2026 9:30 to 2:15 2026 23.30 सो मतलब इस टाइम पे मैच शेड्यूल होगा स्टार्ट होगा तो जो जो बंदा अभी मतलब राउंड टू कंप्लीट कर लिया या फिर करने वाले हो अभी 4 दिन बाकी है और राउंड टू कंप्लीट करने के लिए राउंड टू कंप्लीट करने के लिए आपके पास और 4 दिन बाकी है बस ज़्यादा दिन नहीं है 4 दिन 4 दिन में क्या नहीं हो सकता बहुत कुछ हो सकता है चाहो तो मेरा 4 दिन में मेरा सब्सक्राइबर है 1 मिलियन भी हो सकता है हाँ झूठ बोल रहा हूँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई सच में सच बात बोल रहा हूँ इसका पावर आपके पास है आप लोगों के पास है 4 दिन में मेरा ना मतलब वो सब्सक्राइबर 1 मिलियन क्या 1 बिलियन भी हो सकता है उसका भी पावर आप लोगों के पास है आप चुनोगे ना किसको वोट दोगे इधर वोट नहीं हो रहा मतलब अभी ये भी वोटिंग टाइप का ही बन गया है यूट्यूब का कंपटीशन मार्केट है मार्केट कंपटीशन चल रहा है बहुत शुक्रिया जो जो बंदा मेरे को स्ट्रीम पे आके देखा उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भाई तो यहाँ पे है CV23 CV23 को टॉप फैन लिस्ट पे रख देता हूँ ठीक है और एक हेल्पर चाहिए मेरे को एक हेल्पर चाहिए एक हेल्पर कैसा चाहिए टाइप का चाहिए एक हेल्पर ऐसा टाइप का चाहिए क्या मतलब ऐसा टाइप का चाहिए ऐसा टाइप का बोले तो कैसा टाइप का आप बोलोगे अभी टोटल 8 डे का इवेंट है ये वाला अभी खत्म होने के लिए और ज़्यादा दिन नहीं है पीवीपी लगा दूँ नहीं फुटबॉल लीग पे जाके मतलब पीवीपी कैटेगरी में जाके क्या करेंगे क्या करें डिवीजन रैंक पुश करने के लिए तो अभी भाई 9 से जाना पड़ेगा इधर देख तो डिवीजन 9 में नहीं है खेलता नहीं हूँ ना उतना इसलिए
कैसे होगा? ठीक है, यहाँ से जाता हूँ मैं, डिवीजन नहीं खेलूंगा फिलहाल। अभी क्या खेलूंगा मैं? डिवीजन नहीं खेलूंगा फिलहाल। मैं अभी इवेंट पे जाके पीवीपी इवेंट खेलूंगा। इवेंट मैच, इवेंट मैच क्या है? हाँ देखो, पीवीपी मैं गोल्ड 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 खेल लेता हूँ। गोल्ड खेल के जितना गोल्ड आएगा वो गोल्ड से, क्या बोलते हो आप लोग? मतलब क्या बोलते हो, क्या कहते हो आप लोग? कुछ तो कहो। कौन सा टीम लूँ? कमेंट करो, कमेंट करो। व्हाट इज योर फेवरेट टीम? बस सीरिया ए, मतलब सीरिया ए तो इसको इधर नहीं बोलता। इटालियन लीग, लीग वन तो नहीं, सॉरी, लीग वन तो भाई फ्रांस का लीग हो रहा है। ठीक है, और पेरिस पेरिस मिलेगा ऐसा। तो इधर इटालियन लीग है। इटालियन लीग में किसको लेके खेलो भाई? मिलन, एसी मिलन। हाँ भाई, मेरा भी फेवरेट टीम है। आप लोगों का फेवरेट टीम कौन सा है इटालियन लीग का? कमेंट करके जरूर बताना, बोलना मत। मैं अभी कल ये लीग का मिलान ले लिया, एसी मिलन। एसी मिलन में मेरा नाम भी विधान, और एसी मिलन दोनों मिल के मारेंगे बहुत सारे गोल। चलो देखता हूँ टीम में कौन कौन है। अरे जो है बंदा वो काफी है भाई, इससे ही खेलूंगा। देखो, खेलना मैटर करता है, प्लेयर तो प्लेयर भी मैटर करता है, वो नहीं है। प्लेयर भी मैटर करता है भाई, क्यों नहीं मैटर करता? प्लेयर मैटर करता है, सब कुछ मैटर करता है। मेरा स्ट्रीम थोड़ा डिले हो रहा है, मुझे बता रहा है और पता चल रहा है, क्योंकि नेटवर्क मेरा थोड़ा इशू है। 30 Mbps का मेरा नेटवर्क वाईफाई स्टेशन है। ठीक है, तो आगे जाके और भी तरक्की होगा तो 120 Mbps, 220 Mbps का। अभी तक मुझे नहीं पता 220 Mbps का राउटर या फिर वाईफाई कनेक्शन निकला है या नहीं निकला है। जियो में उतना स्पीड नहीं आता, जियो फाइबर में उतना स्पीड नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है ये जो मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ प्लस गेम कर रहा हूँ ना, जियो फाइबर में चल रहा है। आई थिंक आप लोग कमेंट करके बताना, जियो फाइबर अच्छा है या फिर एयरटेल फाइबर अच्छा है, एक्सट्रीम कौन सा? तो यहाँ पे चलो, तो हो गया एक मैच लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे एक बंदा आ गया भाई, उसका साथ अभी गोल्ड का गोल्ड केजीएफ केजीएफ कोला गोल्ड माइन का एक्शन होने वाला है। देखो, एसी मिलान वर्सेस एसी मिलान, उसका भी फेवरेट टीम एसी मिलान है। चलो देखते हैं उसका टीम का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सा फॉर्मेशन में खेल रहा है, कौन कौन बंदा है, यही सब देखना है मेरे। क्योंकि मेरे पास तो नहीं है भाई, कैंसिल कर दो। मुझे क्या उसका गेम प्लान चेक करना है, ओपोनेंट का गेम प्लान मुझे देखना है, फिर जाके भाई, फिर जाके ना यहाँ से मुझे ये करना है, देख लो। ठीक है, ओपोनेंट का गेम प्लान में यहाँ से देख रहा हूँ। ये ये देखो, लिखा है यहाँ पे, देख लो भाई, देख लो। ठीक है भाई, डरने का बात नहीं है इसको, इसे डर लगता है क्या? देख लो यार, ये मतलब ओपोनेंट का गेम प्लान। अरे देखो मेरा गेम प्लान, नहीं मेरे से ज्यादा उसका अच्छा है भाई। ये लोग, मैं नहीं बोलूंगा यार, उसका अच्छा है भाई। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जो बंदा देख रहा हो उसको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज कमेंट योर country's name. Where are you from watching this live stream? So let's comment your country's name. Thank you so much for watching guys. So बहुत बहुत शुक्रिया। So मैच मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ अभी। चलो यहाँ पे क्या लिखा है, ये बंदा थोड़ा ट्रेनिंग के लिए अब मैदान पे उतर गया, देख सकते हो आप लोग। लुका मॉड्रिच, लुका मॉड्रिच किसका टीम पे है भाई? लुका मॉड्रिच किसका टीम पे है? मेरा टीम, मेरा मेरा होगा क्या? हो सकता है शायद, मेरा भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, क्या पता। चलो मैं देखता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। क्या कहता हूँ, नेक्स्ट कर दूँ क्या? कर दूँ नेक्स्ट? हाँ नेक्स्ट कर देता हूँ। ट्रेनिंग वगैरह बहुत बेसिक है, अभी मैच देख लिया। ठीक है, लेकिन आप लोग भी बोलोगे भाई बंदा, मैं तो स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखो दूसरा बंदा स्टार्ट नहीं किया अभी। 30 सेकंड दिखा रहा है, 29 सेकंड दिखा रहा है, 28 सेकंड दिखा रहा है, 25, 24, 23 ऐसे सेकंड दिखा रहा है, बट 1.2 में है वो देखो। मैं ही स्टार्ट किया, रेडी किया, दूसरा बंदा रेडी नहीं किया। और गाइस दबा के सपोर्ट करो भाई, और कमेंट करो भाई, शेयर करो, लाइक करो, क्या कर रहे हो भाई? ये गरीब को भी थोड़ा ऊपर जाने का मौका दो भाई। आप लोग नहीं दोगे तो कौन देगा भाई?
और मुझे नहीं पता आज मेरा लाइव स्ट्रीम का लैंग्वेज क्या था। इंग्लिश था, फिर हिंदी था। कल से मैं हिंदी कर लूँगा तो समझ में आएगा बंदा बहुत कहाँ से आ रहा है। तो मैच स्टार्ट हो गया, चलो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। चलो मैच स्टार्ट होने वाला है, मैच को आने दो पहले। फिर जाके मैं यहाँ पे थोड़ा सेटिंग वगैरह चेंज करूँगा। So चलो what हो a गया, मैच sight स्टार्ट हो this गया। चलो is. थैंक यू सो मच Another edition of this वाचिंग गाइस, थैंक proud यू फॉर द competition, या अभी चलो just मैच मैच seemingly खेलो। bigger and मैच better थोड़ा still. करो फिर Faces, of course, have ओके come and gone, but some things never change. Those first day feelings, new hopes, new expectations, and the belief that maybe, just maybe, this time it will be your turn. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And as you can see, we've already started here. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, this fella, Maignan, we all remember him, Peter, from his stint in his native France. That time he took an unfancied side to the title against all the odds. I think he had 21 clean sheets that year, which is over half the games, and proof that goalkeepers can make a real difference. Yes, getting the best out of him will count for so much. And he was quick to react. Can he get it through? Oh, he's found support out wide. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He's shifting through the gears here. Swings it across. Nicely aimed pass. Crosses it in here. Pretty cagey early on from both sides. Oh, that pass isn't the best. He has found the way through. That is good strength. Serginho did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He's found the way through. A wonderful effort all by himself. Well, that was certainly impressive, Peter. Great run, just a shame the finish let him down. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. And now a sudden chance to counter. Modric. Milan are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Excellent challenge there, uncompromising. Serginho. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Modric. Serginho. Little doubt, that is a foul. And the referee has shown him a yellow card. Oh no, he's got that wrong. And they've got rid. Rafael Leao is onto this. Out to the right. Salamakas picks it up out. He's got it all. Goal! Milan! It was a great header. The invitation was irresistible and the finish unerring. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So the first, Rafael Leao shoots! It's a goal! Again, in a trice, and they are soaring! There was to be only one outcome. Well, when you get in that position, it's all about composure. Panic can come into it, and it didn't. Things starting to look very comfortable. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Rabiot, and he welcomes it in. Not the most accurate pass. This might spell danger. I think that's offside. Yes, it is.
Rabiot. Milan really have found that they're getting more space out wide, and I can see now there's a lot of activity developing in that area, Peter. Yeah, it's busy in there, isn't it? Yeah, the wide players are doing their stuff and are grabbing the attention right now. Pass is just off target. Ricci. Time perhaps for one last twist before half-time. Rafael Leao. Now Modric. Ricci. Great defending, strong and determined. Now it's Rafael Leao. Modric gets a foot in here, looking for the run. Rabiot. Stood up well to him there. We've got 5 minutes till half-time. Rabiot. Strokes it back. Just too much pressure. Had to go that way. Rafael Leao. And it's Bartasaghi. That's a foul, no two ways about it. Yellow or red? It is red. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Now it's Modric. Oh, just skips past his man. Modric. And the shot's on here. Rafael Leao shifted it to the flank, looking to play him in. It's a pretty loose pass, distributed tidily. And it's half-time here. How would you review the first half? Milan really are lucky not to be down by more, Peter. The manager's going to have to come up with something a little special to lift these players, otherwise this one's as good as done. And we are already promptly back underway. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do... Real chance! Relentless! Just relentless! And they are cruising away. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. And there was his... Salamakers! A reprieve, albeit perhaps momentary. Milan are looking to break at pace. Oh, good-looking ball. And it's Rabiot. Rabiot showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Big chance, must be! Good ball, good take. And that's left him on the seat. He's had a shot! A whisker away from making it 4. Yeah, he came away empty-handed in the end, but it was wonderful movement. And the referee has brought play back and shown him a yellow card. It's their second corner of the game. And that's a simple one for the keeper. Milan are looking to go forward now. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. This ended up in no man's land. Modric. Rafael Leao. The pressing's intense, and it's paid off. That's a cute ball. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Now it's Rafael Leao. Whistle's gone, that's a foul. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score, and obviously he's not going to allow that, Peter, is he? Locatelli is standing over this one. An opportunity then to pull clear here. Locatelli! Oh, what has happened here?
Lofted upfield. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Has a look and plays it forward. Knocks it into space. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Salmakers. Now, can they get him away? And the assistant referee has his flag raised for offside. Serginho. Perez. Ricci. Pass is coming off in quick succession here. No, he's not played the ball, that's a foul. And that's it. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. Attenzione signore e signori, ricordiamo a tutti i tifosi di non perdere di vista i propri bambini durante la partita.